There will be no firecracker competitions during the Ravan Podi event in Cuttack this Dussehra, following a directive from the Orissa High Court. As a result, puja pandals in the Millennium City will miss out on the opportunity to put on their usual grand firework displays. This decision came after the court heard a petition filed by the Sarvadharma Sadharana Parishad. The directive aims to ensure the smooth conduct of the Ravan Podi celebrations. The advocate committee suggested using only colorful firecrackers that are environmentally safe, balancing tradition with the need to address pollution concerns. All necessary arrangements will be made at the lower Balijatra ground where the event will take place. The Cuttack Municipal Corporation and District Administration have also been instructed to take steps to maintain order during the event. Additionally, the court has ordered the DCP Cuttack to manage traffic effectively as large crowds are expected during the festival. बारवाटी सर्वधर्म सांस्कृतिक परिषद तरफ मानवर हाईकोर्ट रे एक इंट्रीम एप्लिकेशन फाइल करी प्रार्थना करा जायथला जे प्रशासनिक अधिकारी माने आनुषंगिक विधि व्यवस्था करूनाहांती बारवाटी तलपड़िया रे रावण पोड़ी पई ए मर्मरे मानवर हाईकोर्ट आज निर्देश देइचंती प्रशासन को आनुषंगिक विधि व्यवस्था 10 तारीख भितर संपूर्ण करिया पई ता छड़ा जो बाण गुड़िक प्रतियोगिता होता बाण फुटा ताको बंद करने निर्देश दि जाइए ओनली ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ करा जाइए एवं ता छड़ा मानवर हाईकोर्ट निर्देश देइचंती जे जो पार्किंग फीस अनअथराइज पार्किंग करा जाई पार्किंग फीस जनसाधारण को जबरदस्ती आदाय करा जाउछि से क्षेत्र में पुलिस कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिवो दरकार पड़ले सेमानक एगेनिस्ट प्रोसीडिंग करा जिवो एवं व्यवस्थित पार्किंग करिया पई मानवर हाईकोर्ट आज प्रशासन को निर्देश देइचंती ता छड़ा जनसाधारण किभଳି पार्वण समय सुरुखुरे उपभोग करेंगे से मर्मरे बा से बाटरे प्रशासन और पुलिस कार्य करू ये निर्देश आज दि जाए। Stay tuned to Orissapost Live to stay updated.